you all of you? I hope you are fine. Today we are starting with our next class of oscillation and wave. Then in last class we discussed about their how we can write their equation of the harmonic function. That equation how we can write beta. Then any equation of the harmonic motion. Okay, yesterday we started our next rate oscillation. So oscillation, we discussed their oscillation and the periodic function, and what is the difference between them, periodic and oscillation function. Periodic function, that is a repetition its path after an equal interval of time, then we will call it periodic motion. For example, our earth is revolving around the sun, then it will take the complete revolution after a fixed interval of time, means 365 days के बाद क्या अर्थ अपना राउंड कंप्लीट करती है और उसके बाद उसी राउंड को क्या है फिर से रिपीट करती है. दैट रिपीटेशन ऑफ इट्स पाथ ड्यूरिंग रिवोल्यूशन अराउंड द सन, देन वी विल कॉल इट पीरियोडिक मोशन. Oscillation क्या किया था? Oscillation is a to and fro motion along a mean position, equilibrium position, then we will call it oscillation motion. So their difference between, we can say, periodic function is not depend upon your equilibrium position, mean position. Mean position equilibrium position के ऊपर depend नहीं करता, क्योंकि periodic के अंदर क्या होता है, कोई भी mean position equilibrium position नहीं होती, but in oscillation having mean and equilibrium position. So here we discussed there any equation of your oscillation motion, x equal to your a sine omega t. Okay, this one we discussed here. Different characteristics of the oscillation motion we discussed already. One is your amplitude. Here that one we will call it amplitude. What? Amplitude. Okay, and here this one is the argument we are keeping in the bracket of this function. That function can be beta sine and can be cosine, depend upon your type of the motion. कि आपका कैसा motion हो रहा है, कैसी wave generate हो रही. That wave can be a sine wave. If your motion will be starting from the mean position, then we will call it that is sine wave. And if your motion of this one here starting from the maximum peak position, then we will call it cosine function. ओके तो यहाँ पे साइन फंक्शन भी हो सकता है, कोसाइन फंक्शन भी होता है. दैट इज अ डिपेंड अपॉन योर टाइप ऑफ मोशन. इफ वी आर टेकिंग एनी पेंडुलम, देन वो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन. दिस वन मीन पोजीशन ना. ओके, सो मीन पोजीशन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देन वी विल गो इन दिस डायरेक्शन अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन. कहाँ तक जाते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएंगे, यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक. If we are starting from the mean position, then we are going up to the extreme, then we can form this one wave like this one, mean to extreme. Okay, so this one type of the wave your sinusoidal. If we are starting from the extreme position and we are going back mean position, then an opposite direction we are going there, then we will call it cosine wave. Okay, so here can be this one function, periodic function, sine can be cosine, and this one we will call it argument. And here displacement will be there. That displacement can be x and along y axis. So these terms already we discussed in last class beta. So our next topic here left in these characteristics, your phase difference, phase and phase difference. Here the quantity omega t plus phi is the phase of the SHM at the time t. Okay, let we are taking there this one equation, y equal to a sine omega t. Okay, this only written. Okay, but if we are writing here some extra factor, that is here we are writing there phi. Okay, this one extra factor we will call it phase. इस extra factor को ही हम क्या बोल रहे हैं? phase बोल रहे हैं. And what is phase difference? This one is a telling about this one state of the motion. It described the state of the motion at that instant. कि जब जो particle है वो किसी instant में कहाँ से start हो रहा है? mean position से start हो रहा है, extreme से start हो रहा है. What is the state of the motion during this time, t time? Then we will call it that is your phase. Okay, that phi will be their phase, and phi value can be 0, can be pi by 2, can be pi. Okay, depend upon your type of the wave. We will discuss this one, how we will write. Then the quantity phi is a phase as a time t equal to your 0 is called the phase constant and initial phase. Okay, so here if we are writing there any wave, we are starting here from the mean position, then wave is traveling like this one form, another wave is traveling like this one form. So initially this one wave is starting from your x t, this one here t only. Okay, starting from the mean position, and this one wave starting from this one position, peak position. So here phase difference between two waves, that will be called, we will call it pi by 2.
So here we can write that y equal to a sin omega t plus pi by 2, that is a phase difference. For example, if any wave we are starting from like this one, another wave we are starting from like this one, so here phase difference we will call it this one here pi. Okay, so phi is a equal to your pi, that phase difference depend upon your how their waves are traveling along your with the time along your x-axis. Okay, I hope you understood beta how we can find a phase and phase difference. Phases are telling about their state of the motion, in which state that waves are traveling, so this one state we will call it phase. Next, our type of your oscillation motion, that we are dividing into two types: simple harmonic motion, harmonic function, and non-harmonic function. That is a special type of the periodic oscillatory motion in which the particle oscillate along a straight line and acceleration of the particle always directed toward the fixed point on the line. Okay, for example, if we are taking their pendulum, ओके पेंडुलम अगर हम हैंग करते हैं, यहाँ पे क्या ले रखा हमने, एक बोब ले रखा है, इसके ऊपर क्या अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन दैट बोब विल बी शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल गो अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, कहाँ तक जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, जहां जैसे ही शिफ्ट होएगा देन अगेन इट विल कम बैक एंड कमिंग बैक ऑन द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट विल गो दी अनदर साइड. उसके बाद कहाँ जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा. तो ये क्या आपकी मीन पोजीशन है, और जहां मैक्सिमम हाइट तक जो पेंडुलम का बोब जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं. तो किसी भी पेंडुलम के अंदर दो पोजीशन हो सकती है बेटा, मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. सो इट विल बी गो फ्रॉम हियर टू देयर एंड देयर कमिंग बैक अलोंग द मीन पोजीशन. आफ्टर दैट इट विल गो अपोजिट डायरेक्शन, वापस जाएगा और स्विंग होके क्या है, वापस मीन पोजीशन पे आएगा. तो इसका क्या हो जाएगा, वन पाथ complete हो जाएगा, one oscillation is completed within 1 second, then we will call it frequency. Okay, time period, that how much time is taken to complete one oscillation, that we will call it time period. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है कि अगर जैसे हमने क्या है मीन पोजीशन से पार्टिकल को इधर लगाया है तो ये इस साइड जाएगा. सो एक्सेलरेशन ऑलवेज विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन. पार्टिकल जा तो इधर रहा है बट इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो किधर लगती है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगती है हमेशा. सो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर. Okay, how this one coming negative, this one we will do later on in the derivation of this one, but here this one telling that motion in which your acceleration will be opposite direction of the displacement. क्योंकि बॉडी क्या है, बोब क्या है, इधर डिस्प्लेस कर रहा है बट एक्सेलरेशन कहाँ लगेगी, टुवर्ड दी मीन पोजीशन की. जैसे उसको लीव करेंगे तो वापस क्या है, मीन पोजीशन. देखो पेंडुलम ऐसे होता है, इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर जाएगा बट एक्सेलरेट तो ये इधर करेगा बिकॉज ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स. इसके ऊपर क्या लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स लगता है बेटा. सिंपल हार्मोनिक मोशन, अनदर एग्जांपल यू कैन से स्प्रिंग ऑल्सो. स्प्रिंग का केस भी क्या होता है, एसएचएम का केस होता है. क्लियर, स्प्रिंग में भी क्या है, फोर्स लगाते हैं, जैसे ही फोर्स लगाएंगे उसकी लेंथ को इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं, जैसे ही फोर्स लगाएंगे फोर्स को रिमूव करने के बाद क्या है, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. सो टू चेंजिंग इट्स पोजीशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन, देन इट विल बी योर एसएचएम. तो जैसे ही हम इसके ऊपर इलोंगेट करते, लेंथ को बढ़ाएंगे, जैसे स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो क्या करेगा, वापस आके रुकेगा अपनी मेन पोजीशन के ऊपर. तो जितना इलोंगेशन लेंथ के अंदर हुआ है वो चेंज वापस उसको लाने में जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, रेस्टोरिंग फोर्स. ओके, सेम यहाँ पेंडुलम में वर्क करता है. पेंडुलम को अगर यहाँ से अगर फोर्स लगाया जाए तो इस डायरेक्शन में जाएगा और रेस्टोरिंग फोर्स ट्राई करता है कि इधर ना रह के वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए. ओके, तो यहाँ मीन पोजीशन पे आने के बाद पेंडुलम यहाँ नहीं रुकेगा, क्या करेगा, ये अपने आप ही दूसरी डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है बट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ देयर रेस्टोरिंग फोर्स. इसके ऊपर कौन लग रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जो ट्राई कर रहा है दैट इट विल कम बैक ऑन दी मीन पोजीशन, की फिर से वापस क्या है, मीन पोजीशन पे ये आ जाए. तो ये ऐसे ऐसे मीन पोजीशन के अलोंग क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है अगेन एंड अगेन. सो here acceleration always will be opposite to the displacement acting toward the mean position. तो mean position के ऊपर क्या होता है, फोर्स हमेशा क्या रहता है बेटा, इक्वल टू जीरो. मीन पोजीशन के ऊपर फोर्स क्या रहता है, जीरो रहता है. acceleration there on this one point velocity will be equal to zero.
वेलोसिटी क्या रहेगी इस पॉइंट के ऊपर, जीरो रहती है. हियर ऑल्सो ऑन एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी बिकम्स जीरो ऑफ दैट पार्टिकल. वेलोसिटी जीरो होती है तभी वो क्या है वापस आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉल को थ्रो करें अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉल कब तक ऊपर तक जाएगी, जब तक उसकी वेलोसिटी लग रही है. जैसे उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बॉल अपने आप आके गिर जाएगी. सो डायरेक्टली यू कैन से दैट ऑन द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स जीरो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन इट विल कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस. वहां पे अर्थ की सरफेस पे आके गिर जाता है. सो हियर ऑल्सो दिस पेंडुलम विल गो अप टू द एक्सट्रीम पोजिशन. विच पोजिशन, कहां तक जाएगा, जब तक क्या उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती. जैसे ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वापस मीन पोजिशन पे आएगा, फिर दूसरी साइड जाएगा. सो ऑन द मीन पोजिशन फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन भी क्या होती है, जीरो होती है. सो हियर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जीरो होती है, सॉरी. एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो ऑन एक्सट्रीम पोजिशन. एक्सट्रीम पोजिशन पे पोटेंशियल जीरो होती है, मैक्सिमम होती है. काइनेटिक क्या होती है, जीरो होती है. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो ऑन एक्सट्रीम पोजिशन. मीन पोजिशन पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है, बट काइनेटिक विल बी मैक्सिमम. इसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम पोजिशन पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है. वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी जीरो हुई तो काइनेटिक भी हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है एक्सट्रीम पोजिशन पे. और मीन पोजिशन पे क्या होता है, हाइट जीरो होती है. मीन, दिस वन इज अ मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन. इस पे क्या है, पेंडुलम ऊपर ही नहीं गया, ऊपर ही नहीं गया, तो हाइट क्या है पेंडुलम की, सेम वही है, जीरो. ओके. और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, mgh. if h will be equal to your zero, so potential energy also will be equal to zero. So this one is a complete structure of the SHM. How you can explain this one SHM? So this one we can write their harmonic function and non-harmonic function. अब harmonic function क्या होते हैं, harmonic function भी होते हैं बेटा जिनको हम harmonic equation के form में we can write down. Okay. So here for example y equal to x sin omega t, x equal to y equal to a sin omega t and x equal to your a cos omega t. These are the हार्मोनिक फंक्शन. ये हार्मोनिक फंक्शन वही होंगे जिनको हम हार्मोनिक इक्वेशन की फॉर्म में वी कैन डिस्क्राइब दिस वन. देन वी कैन राइट देयर हार्मोनिक फंक्शन हैविंग एम्पलीट्यूड, हैविंग सिंगल फंक्शन ऑफ दिस वन. साइन और कोसाइन का सिंगल अगर फंक्शन होता है तो उनको हम बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन. इफ देयर इज अ मोर देन वन फंक्शन विल बी देयर, देन वी विल कॉल इट नॉन हार्मोनिक फंक्शन. फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग एन इक्वेशन y इक्वल टू साइन ओमेगा टी b cos omega t. Okay, so this type of the equation will become in category of the non-harmonic function. Clear? I hope you understood beta. If any function we can denote in form of the harmonic equation that having same amplitude and having single function, then we will call it harmonic function. Non-harmonic, if we can't express equation, this one equation of function sine and cosine function, we can't express in form of the single function and having different amplitude, then we will call it non-harmonic function. Here different na, a and b different amplitude are there, so two function are there, so we can't express in form of the harmonic equation, that's why we will call it non-harmonic function. Now our next, how we can find their displacement in form of the simple harmonic function. अब हमने simple harmonic function read किया था कि to and fro motion along any fixed position, equilibrium position, that is known as your oscillation motion. And this one how we can find their displacement in this case. So let we are taking a पार्टिकल दैट इज मूविंग सराउंडिंग दिस वन. एक पार्टिकल जो यहाँ से मूव कर रहा है दैट इज मूविंग इन दिस वन डायरेक्शन अलोंग दिस वन केस. सो हाउ वी कैन फाइंड हियर डिस्प्लेसमेंट. लेट हियर एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वन पार्टिकल फ्रॉम द center of this one path, then let we are taking there a. So how much displace will be there, then along x axis this one your x, and along y axis let we are taking there y displacement. Okay, so here this one we are writing again a is amplitude of this one. So this one here x axis, this one here y axis. So as this one from the mean position, let it making your theta, and theta how we can write, already discussed in your previous unit, that is equal to omega equal to
angular velocity is equal to your angular displacement theta divide your time. So theta we can write there omega t. तो theta को हम क्या लिख सकते हैं omega t. So this one theta we can write there omega t. So for find out this one terms, then x and y, then here we will draw the perpendicular on it. क्या करेंगे perpendicular draw करेंगे. Let here naming we are writing there p q r. So first we are writing there, let a particle moving in circular path, periodic path. So in right triangle OPQ हमने क्या था राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे टू फाइंड आउट दी दिस वन साइड एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट फॉर दी राइट ट्रायंगल. तो राइट ट्रायंगल के अंदर ही हम फाइंड कर सकते हैं. सो एज वी नो अबाउट दिस वन यर साइन थीटा इक्वल टू यर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन एनी राइट ट्रायंगल एंड कोस थीटा इक्वल टू यर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू एनी राइट ट्रायंगल. So how we can write there? First we are writing this one here. Front of this one theta will be equal to your perpendicular. So this one side will be equal to your base. So in this one side, this one your P only. So in PQ we can write there cos theta equal to your base upon hypotenuse in any right triangle. Okay. OPQ. This one right triangle के अंदर क्या कर रहे हैं हम? हाइपोटेन्यूज के राइट ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा अप्लाई किया. कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो हियर बेस विल बी इक्वल टू योर x, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू a. सो बाय यूजिंग दिस वन वी कैन राइट देयर कोस थीटा इक्वल टू योर x by a. So by using this one we can write there x by a cos theta. This one equation of the displacement equation. Same for this one side we can write there this your y, then OQ T we can write there. In this one right triangle, in right triangle OQT. OQT के अंदर क्या यूज कर रहे हैं हम? That is equal to your sin theta. Sin theta equal to your perpendicular upon hypotenuse. तो अगर आपका perpendicular upon hypotenuse, so how we can write this one? Your hypotenuse will be equal to this one a and this one side will be equal to your y. So here we can write there y by a. So by using this one, then y equal to a sin theta. This one our displacement along y-axis, this one displacement along x-axis. So omega theta we can write there. I told you how we can write there theta equal to omega t. So convert this one theta equal to omega t. So here we can write there y equal to a cos omega t along x-axis, and second equation of the displacement y equal to a sin omega t. This one along x-axis. So both equation our displacement came x equal to your a cos omega t and y equal to a sin omega t. So by this one help of this one circular motion, periodic motion, we can find their displacement. That displacement can be along x-axis, can be along y-axis, like this one way. So using this one we will find their velocity in the simple harmonic motion. So we can write there rate of change of displacement is known as velocity in SHM. ओके जो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड की उससे हम वेलोसिटी हाउ वी कैन फाइंड देयर बाय यूजिंग योर rate of change of displacement, we will call it velocity. So here v equal to we can write there dx by dt, that is equal to your simple harmonic motion velocity. So how we can write there? We know about this one. As we know, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड की थी. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बाद क्या यूज किया था? x इक्वल टू योर a sin omega t. Okay, this one can be along y, can be x. So x equal to a sin omega t. X is displacement, a is amplitude of the wave, and your sin omega t. Omega is angular frequency, t is time. So by using this one, then velocity will be equal to, now put value of
put value of x, here we are writing their first equation, put value of x in equation first. So write here v equal to your d by dt, x we can write a sine omega t. Clear? So a is constant. As we know about the rule of the differentiation, constant will come outside from here, then we will take differentiation of the function, and later on we will take differentiation of the angle. So here we can take outside constant, because here with respect to t, means t will be here variable, so remaining factors will be constant for it. So a is constant, then d by dt, here we can write their sine omega t. So how you can take differentiation of this one? Here came v equal to a d by dt sin omega t. सो बेटा डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? फर्स्ट हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, आफ्टर द टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन देन वी विल टेक डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल. सो हाउ वी कैन राइट देयर, a will be remain as it is, function differentiation, then here sin differentiation we can write their cos, and angle will be remain as it is. ओके एंगल को एज इट इज इस फंक्शन के साथ रखना है, एंगल को हम वेरी नहीं करवा सकते, वी कांट चेंज एनीथिंग फ्रॉम द एंगल. सो हियर नाउ वी विल टेक डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल. एंगल क्या हमारे पास ओमेगा टी. अब ओमेगा टी के अंदर क्या है, टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देन ओमेगा विल बी कांस्टेंट फॉर इट. ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a cos ओमेगा टी. सो हियर लेफ्ट योर ओमेगा dt by dt, and dt by dt we can write there 1 a omega cos omega t, this one your velocity. So v equal to a omega cos omega t, this one came our velocity. क्या आ गई हमारे पास, ये velocity आ गई. Okay, so more you want to solve it, then we can write there, as we know trigonometry rule क्या कहता है, अगर इसको further change करना है, so how we can write there, sin theta साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो थीटा हमारे पास क्या है, ओमेगा टी है. सो वी कैन राइट देयर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू आवर 1. So by using this one we can find value of your cos omega t. So cos omega t we can write there, cos omega t equal to 1 minus sin omega t square, right here square, and this one square we will take this one side, then it becomes here अंडर रूट. क्या बन जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट बन जाएगा. तो हमारे पास क्या आ गई, cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, और यहाँ से हमने साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में हमने क्या यूज किया था, हियर अगेन यू कैन सी हियर दिस वन x इक्वल टू योर a साइन ओमेगा टी. Yes na? So sin omega t from here we can write there, sin omega t from here x by a we can write. From the displacement we will take out the value of sin omega t, और sin omega t क्या हो जाएगा, x by a. So put this one value in that equation. तो हम यहाँ पे क्या है, sin की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे. So here using as we know this one here sin omega t equal to your x by a, ये आ गया हमारे पास. तो यहाँ पे किसका है, क्या स्क्वायर है इसका, स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सो आफ्टर दिस वन पुट हियर, देन 1 minus x square by your a square under root. So replace this one cos omega by this one, put value of cos omega t. ओके, वैसे तो वेलोसिटी हमारी ये आ गई, बट फर्दर यू वांट टू सोल्व आउट फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देन यू कैन फाइंड देयर v इक्वल टू, पुट वैल्यू ऑफ cos omega t. सो v इक्वल टू वी कैन राइट देयर v इक्वल टू a ओमेगा cos omega t. तो हमारे पास cos की वैल्यू क्या आई है, cos इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर अंडर रूट, a omega under root 1 minus x square by a square. Okay, take LCM of this one, then solve it. Under root a square minus x square divided by your a square, square to under root cancel out, then we will take out from the under root, then we a omega. So here left a square minus x square, a to a cancel out. So velocity our came v equal to omega under root a square minus x square. This one came.
Okay, I hope you understood beta how we can find this one velocity v equal to omega. So this one also formula, and another one, this one opposed form also, this one also your formula of this one. दोनों क्या है, वेलोसिटी के ही रिलेशन है. इसके बाद क्या कह रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी. ओके, मैक्सिमम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम कहाँ रीच कर गया, इधर मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है मैक्सिमम रीच करेगा. सो हियर वी कैन राइट देयर फर्स्ट वन केस ऑन एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन का मीनिंग क्या है बेटा, कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन का मीनिंग क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी. एक्स क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी. सो हेयर एक्स इक्वल टू योर ए ओनली. एक्स क्या बन गया आपका, ए ही बन गया. सो एज वी विल पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एक्स क्या होगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल ही हो जाएगा. एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो डायरेक्टली वी कैन से एक्स इक्वल टू ए. सो ए टू ए कैंसल आउट, देन वेलोसिटी आवर केम हियर 0 ओनली. तो हमने यही डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या रहती है, वेलोसिटी आपकी 0 रहती है. ओके, आफ्टर द कमिंग बैक ऑन द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या रहेगा आपका, एम्पलीट्यूड बिकम्स योर 0. ऐसा ही होता है, एम्पलीट्यूड बिकम्स 0 ऑन द मीन पोजीशन. क्लियर. सो हियर एम्पलीट्यूड बिकम्स 0 ऑन मीन पोजीशन, वी कैन से ऑन मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड बिकम्स 0. तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा 0 माइनस योर एक्स स्क्वायर. सोल्व कर दो, अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर कैंसल आउट. सो हियर वी कैन राइट देयर v इक्वल टू ओमेगा एक्स. तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑन दी mean position. Okay, and this one is a velocity on the extreme position. extreme position पे हमेशा क्या रहती है, velocity 0 रहती है, और mean position पे velocity क्या रहती है, omega x. it will be directly proportional to the displacement. Okay, I hope you understood beta velocity during your SHM. So next one, your acceleration, how we can find there, that is rate of change of velocity in SHM is called acceleration in SHM. ओके, जो हमारे पास वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी. यही थी वेलोसिटी. किस पे रिस्पेक्ट में, जब हमारा x क्या था, a साइन ओमेगा टी. तो ये क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या हमारी वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ही आगे. तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हम किसको कह रहे हैं, जब वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन. ए इक्वल टू योर डीवी बाई dt. तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा. सो एज वी नो दिस वन, वेलोसिटी इज इक्वल टू योर d by dt. velocity we can write there a omega cos omega t, we can write it. So constant factor we can take outside from here, then here left your a equal to your, बेटा देखो यहाँ भी एम्पलीट्यूड के लिए भी हम स्मॉल a यूज कर रहे हैं, सो एक्सेलरेशन के लिए हम कैपिटल A यूज कर लेंगे. due to because of some confusion will be there. So here we are writing there a only. So acceleration we can use here, acceleration equal to here a omega outside d by dt cos omega t. Differentiation with respect to time, here will become a omega, and differentiation of this one will become your sin omega t, and here will be omega. So omega square will become here sin omega t. Acceleration will be equal to this one, a omega sin omega t. a ओमेगा साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया. उसके बाद हम क्या, साइन ओमेगा टी को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स बाई ए. तो यहाँ से हम पुट कर देंगे a इक्वल टू योर एम्पलीट्यूड ओमेगा साइन ओमेगा टी. ओके, तो यहाँ पे साइन ओमेगा क्या आ रहा है,
Sin omega t equal to x by a omega square x by a to a cancel out. वेट बेटा, कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव होता है, कोस डिफरेंशिएशन विल बी नेगेटिव. ओके, so here will be your negative sign. So here your acceleration will become equal to omega square x. This one your negative, this one your acceleration. Okay, negative sign क्या indicate कर रहा है? If displacement is acting from the mean position in this direction, या displacement is in this direction, but acceleration will be act in this direction. जो acceleration होती है वो क्या है? mean position की तरफ होती है. This negative sign is indicating like this one. I hope you understood better how you can find this one. Acceleration, velocity and displacement in your SHM equation, like this one way we can find there. So in next class we will discuss their energy, how we can find there in our simple harmonic motion. So try to solve like this derivation, then I hope you understood properly. Thank you, have a nice day.